All right. Bismillahirrahmanirrahim. Bacha, today we'll be starting, inshallah, the past papers questions on mensuration. So we studied the topic already. So now it's time for us to make this recording available. So I started the recording of the class already. Okay. Now you can see that they say that calculate the diagram shows a sector OXY of a circle with a center O and the radius 9.5 centimeters. The sector angle is 53, and we should know that sector is part of circle. All right. Show that the area of the sector is 41.7. So we know that the area of sector is equals to theta divided by 360 multiplied by pi r square. So theta is 53 and divided by 360 multiplied by pi. The value of r is 9.5 whole square. So let's use the calculator now. Let's use it. So 53 divided by 360 times shift and pi button bracket 9.5 bracket close square. So the answer is 41.7. So the answer is 41.7. So the result is shown because the examiner wanted me to solve till correct to one decimal place. Now they say that the area of the triangle OAB is 1 by 3. So triangle OAB is AOB. This is 53. Calculate OA. For example, O to A is X. So that is also X because this is given here that O to A is equals to O to B. They say that the area of this triangle is one third of the circle, area of the sector. So area of a triangle would be one third of the sector. So answer divided by 3. So the answer is 13.9. 13.9 is the area. We need to find out X now. So we know that area of the triangle is equals to 1 by 2 product of two sides multiplied by sine included. Right, Noor? Right, Ayana? Yes, sir. So 13.9 is equals to 1 by 2 x square multiplied by sine 53. Ayana, you know this already that this 2 will be multiplied here and sine 53 will be in division. Agree? So Yes, sir. taking square root on both sides, square root cancel. So let's write square root fraction. So 13.9 multiplied by 2 divided by sine 53, close the bracket, equals. So the answer is x is equals to 5.899. So till three significant figures, it is 5.90. So x is equals to 5.90. Is this clear, everybody? Yes, sir. Any question in this part? No. देख लें एक दफ़ा खैर है मैं थोड़ा वेट के बाद दूसरा स्टार्ट करता हूँ All right, proceeding. They say that the diagram shows sector OPQ of a circle with a center O and radius 24 centimeter. Better, can you hear me? And the sector angle is 60 degree. A cone is made from this sector. इस sector से cone को बनाया गया है. So what we have to do, we know this already that the net, this sector is the net. We know this already. Agree?
So O to P is 24, means that O to P is 24. That is 24. Agree? First of all, we need to find out what is PQ. Because I know this PQ is the arc length. Agree? Right, Ayana? Yes, sir. So we know this that arc length is the part of circumference. Agree? So this is theta divided by 360 multiplied by 2 pi, and the value of r is 24. Let's find out the arc length means PQ. So PQ arc length is 60 divided by 360 multiply by 2 shift and pi multiply by 24 bracket close. So the answer is 8 pi. Agree? So it means that arc length is 8 pi. Agree? Yes, sir. So it means that this arc length is PQ is 8 pi. So Kabir, can I say that this PQ is the whole circle of the cone? Agree? Yes, sir. So it means that circumference of the circle is equals to 2 pi r. So this circumference is equals to 8 pi divided by 2 pi r divided by 2 pi on both sides. So 2 pi and 2 pi cancel. So r is equals to 4. So the radius is how much? The radius is how much? The radius 4 4. is 4 centimeter. centimeter. So height of the cone is unknown yet. Right, Noor? Can you hear me? Yes, sir. So according to this, they want us to find the volume, but we know that with the help of a triangle, we can find out the height. So this is the triangle. This is hypotenuse, that is 4, so that is x. So hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So 24 square minus 4 square is equals to x square. Taking square root on both sides. Square root cancel. So here square root 24 square minus 4 square. So the answer is 23.66, means x is equals to 23.7. Is this clear? Is this clear? And this x is the height of the cone, 23.7. So the volume of the cone is 1/3 pi. Value of r is 4 square and the height is 23.7. Right, Ayana? Yes, sir. So that is 1/3 shift and pi bracket 4 bracket close square times 23.7. So the answer is this much SND 397.0. 397.0. So the answer must be in three significant figures. So it is 397. Is this clear, Ayana? Yes. Okay, that's very good. So done. Okay. Look at another question, Bacha. According to this question, a cuboid has a length L and W and height is h. Okay, so this is the net of the cuboid, right, Ayana? Yes, sir. Ayana, can I say that this part is L, so that is also L, that is also L, that is also L, that is also L, that is also L. Can I say that? Yes, sir. So it means that they all are same. Okay. Can I say that, Ayana, that this is H, so that is also H, 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 and that is also H. Can I say that? Yes, sir. Okay, so the blue ones are H's. So H, 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 and H. Okay. So let's take the green one. So this is width. So this is width, this is width, this is width, and this is width. Agree? Agree? Yes, Yes, sir. sir. Any problem?
Okay, we can see that this is also H. Agree? So the diagram shows the net of the cuboid. The width is ratio length is 1:2. So 1:2 का मतलब ये है कबीर कि that width divided by length is 1/2. Agree? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 2W is equals to length. Agree? It means that length is the double of width. So according to the examiner Kabir, they say that this whole part is equals to 20.1. Agree? Agree, Kabir? Yes, sir. This whole part consists of H, this H, this is W, and this is also H. Yes or no? So can I say that H plus W plus H is equals to 20.1? आयाना इसकी समझ आइए बेटा? जी सर। आया- तो 2H plus W equals to 20.1. This is your equation number one. Okay. Now they say that in the second, the given scenario, Kabir, you can see that this whole length is equals to 37.8. Yes, sir. और कबीर नजर आ रहा है ना कि इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है देखें, ये नजर आ रहा है कबीर आपको ये वाला, that L plus H plus L plus H that is equals to 37.8. So Yes, L plus H plus L plus H that is equals to 37.8. So can I say that 2L plus 2H is equals to 37.8, Kabir? yes, sir. According to the question, beta length is equals to 2W. So length की जगह पे जरा 2W डाल दो, 37.8. So 2 2s are 4W plus 2H is equals to 37.8. ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर नीचे लिख लें, ठीक है? So it would be 4W plus 2H is equals to 37.8. नीचे लिख दें, उसके नीचे ऊपर वाली लिख दें। जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज 2H प्लस W इट इज इक्वल्स टू 20.1। ओके आयाना H के नीचे H नहीं लिखना चाहिए तो जरा थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है? प्लस 2H और W यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, आपको नजर आ रहा है कि प्लस 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 हो रहा है, लेकिन 2H कैंसिल करना चाहता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन के जरिए, तो माइनस करेंगे तो लोअर इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कट गया। 4 is 3W, 37.8 minus 20.1, so 37.8 minus 20.1, so the answer is 17.7, I guess. Yes, divide by 3 on both sides. Divide by 3 is approximately 5.9. Yeah, so W is 5.9. So W is 5.9. Ayana, according to the examiner, length was double of it. Yes or no? So यस सर। 5.9 multiplied by 2. So the answer is 11.8 is the length. Okay, height is, we have the formula for the height. हमारे पास height के लिए हम formula question में given था. Finding L, finding H, sorry. So the formula was 2H plus W that is equals to 20.1. Agree, Ayana? So 2H W was 5.9 is equals to 20.1. So 2H is equals to 20.1 minus 5.9. So 2H is equals to 20.1 minus 5.9. So the answer is 14.2. Divide by 2 on both sides. So H is equals to 7.1. Clear, Ayana? यस This सर। was an IGCSE paper and the paper is 4 May June 2021. Okay. Clear? Clear, everybody? Yes, sir. Okay. कभी read the question, जरा इस question को पढ़ें जरा सही तरीके से। The I'll be right diagram back. shows the diagram shows a solid pyramid with a rectangular base ABCD. E is vertically above D. Angle EDC is equals to EDA, which is equals to 90 degrees.
AB is equals to 18 cm, BC is equals to 15 cm, and EC is equals to 24 cm. The pyramid is made of wood and has a mass of 800 grams. Calculate the density of the wood. जी बच्चा, क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा सबने? Okay. The diagram shows a solid pyramid with a rectangular base. E is vertically above D. Okay. Angle EDC and angle EDA is 90 degrees. AB is equals to 18 and BC is 15. Okay, leave it. The pyramid is made of wood. लकड़ी का बना हुआ pyramid है और उसका मास जो है वो 800 ग्राम है. Calculated density. अच्छा, डेंसिटी के लिए उन्होंने पहले कहा है कि वॉल्यूम निकाल लो, बिकॉज डेंसिटी के फॉर्मूले में है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. ओके, so first of all, we have to find out the volume. So volume is equals to 1 by 3 area of base. Okay, Maruk, what is the area of base? Base का एरिया क्या है? इस pyramid की बेस क्या है? एसएन. बेटा Sir, क्वेश्चन में 18? ऑलरेडी रेक्टेंगुलर है. देखें, इट्स अ रेक्टेंगुलर pyramid. तो रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विच इज 18 टाइम्स 15. समझ आ गई बेटा सबको? अंडरस्टूड? Yes, sir. एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज अननोन. हाइट ऑफ द पिरामिड जो है वो हमारे पास अभी अननोन है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें हाइट को जो है फाइंड आउट करना है. सो इबाद वी कैन सी दैट ई टू डी, ये ट्राइंगल मेक आउट कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज 24. ओके, दिस इज डी सी एंड दैट इज ई. ओके, डी टू सी इज 18, तो ये हाइट अननोन हो गई. सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग. 24 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, यहाँ पे कट जाएगा. सो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर minus 18 square. So the answer is 6 under root 7, which is 15.9. So the height of the pyramid is 15.9. So height of the pyramid is 15.9. So we can write height now here. हम height यहाँ पे लिख सकते हैं 15.9. राइट है ना? सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3. बेटा इतना डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, इसीलिए एग्जामिनर जो है ना आपको ट्रिक करेगा. ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15.9. 15.9 कल मैंने पिरामिड्स के फॉर्मूले में लिखवाया भी था आपको. 1431. सो अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर दें तो 1430 वाज द आंसर. तो ये वॉल्यूम हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, we need to find out the value of the density. So density, it is equals to mass divided by volume. Mass is 800 divided by 1431. So 800 divided by 1431 is equals to this one, which is 0.559. So 0.559.
Density is equals to mass divided by volume. Okay. So density, it is equals to 0.559. Okay. So this is gram per centimeter cube. ओके, देख लें बेटा कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं की। जरा चेक कर लें बेटा 1 मिनट के लिए। 18 मल्टीप्लाई बाय, ये जरा मैं देख रहा हूँ। ये बात समझ आइए बेटा। Yes, sir. पहले हमने वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड निकाला। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड निकालने के बाद वी मल्टीप्लाइड विद, वी डिवाइडेड दैट वॉल्यूम, दैट मास ऑफ द, क्या नाम है, वुड। ठीक है, द पिरामिड इज मेड ऑफ वुड ना, तो इसका मास गिवन था 800 ग्राम्स। और डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन था दैट 800 को हमने डिवाइड किया 1431 सेंटीमीटर क्यूब में। सो 0.559 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी। क्लियर? Okay, now they Yes, say sir. that calculate the angle between BE and the base of the pyramid. Okay, BE and the base of the pyramid. तो आया ना, पे अटेंशन बेटा, BE ये चीज है, ठीक है, और बेस ऑफ द पिरामिड बेटा ये है जो अंदर है। यस और नो? ये 3D है। सो वी नो दिस कि हमें बी टू ई की लेंथ का भी नहीं पता। वी डोंट नो बी टू डी, हमारे पास ई डी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये ट्राइंगल हम जरा साइड पे निकाल रहे हैं आया ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें क्वेश्चन की समझ पड़े। ई टू डी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हाइट है पिरामिड की, विच इज 15.9। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15.9। ओके, ई टू बी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ओके जी, ई टू बी भी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास डी टू बी भी नहीं है। ओके जी, अब ये डी टू बी जो है आयाना, क्या ये हाइपोटेनस नहीं है ए डी बी ट्राइंगल की? है ना? Yes, sir. है ना? आवाज आ रही है मेरी? डी, बी एंड ए, देखिए ये 18 है, ये 15 है, तो क्या मैं डी बी निकाल सकता हूँ? तो फिर ऊपर के ट्राइंगल में लिख सकूंगा, यस और नो? Yes, sir. तो ये मेरी हाइपोटेनस है, एंड यू नो दिस हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एच इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट किया है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, यही वाला, प्लस 18 स्क्वायर। सो द आंसर इज 23.4। एच इज इक्वल टू 23.4, हाइपोटेनियस हो गया, तो ये 23.4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? Now the examiner is asking me to find out the value angle which it is making with the base. So angle B अब हमने find करना है, ये वाला angle. So the side opposite to the angle is perpendicular and this is base, right, Ayana? Yes, Right? sir. So let's find out the tangent. So the formula is tangent because perpendicular and base. क्योंकि आपको पता है एंगल में आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर बेस अवेलेबल है। सो टेंजेंट बी, it is equals to perpendicular, which is 15.1, and the base is 23.4. So B is equals to tangent inverse of the bracket 15.1 divided by 23.4. So shift and tangent inverse fraction 15.1 divide by 23.4 bracket close. So the answer is 32.8. So answer is what? 32.8 degrees. राइट है ना? ये बात समझ आ गई बेटा? नूर, मारो, Yes, एहसन। sir. सो ये 4 मार्क्स के लिए था, और ये था 4/2 मई 2021 का, और आईजीसीएसई का क्वेश्चन था। चलें जी, ये देख लें बेटा। द डायग्राम शोज अ कंटेनर फॉर अ स्टोरेज ग्रेन, स्टोरिंग ग्रेन। बेटा गांव देहात के अंदर जो है, अक्सर जो आपके जो गंदम होती है उसको इन कंटेनर्स में सेव किया जाता है, ठीक है। द कंटेनर इज मेड ऑफ अ हेमिस्फीयर, टॉप पे हेमिस्फीयर है, देन फिर सिलेंडर है, देन वी हैव अ कोन। Okay, calculate the volume of the hemisphere. Okay, volume of hemisphere is divided by 2. Yes or no? स्फेयर को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या हेमी आता है इबाद? Yes, sir. आता है. सो वॉल्यूम वुड बी, बिकॉज वॉल्यूम के देखो स्फेयर का फॉर्मूला गिवन है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करना है। इज दिस क्लियर? 4/3 पाई, Yes, आर sir. की वैल्यू है हमारे पास 2, ऊपर आ गया क्यू, होल डिवाइड बाय 2। पहले हम लोग पहले ये ऊपर वाला निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है आयाना, 4/3
मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय पाई, शिफ्ट और ये बटन पाई, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ओके जी, ये आ रहा है। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ना, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। सो 16.75 इज द आंसर। तो 16.75 इज द आंसर, लेकिन मैं लिखूंगा 16.8। इज दिस क्लियर है ना, क्लियर है बेटा आपको? जी सर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज गिवन। हमारे पास हेमी है, हम सिलेंडर भी निकाल सकते हैं, सिलेंडर का भी डाटा पूरा मौजूद है। वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रेडियस आर। अब एच निकालने के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई, आर की वैल्यू है बेटा 2 स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.2। कैन यू सी दैट एसन? सो शिफ्ट एंड पाई, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। मारो आवाज आ रही है बेटा? 5.2। सो द आंसर इज 65.3, 65.3। ओके, इबाद वी नो दिस कि अगर टोटल में से वी सब्ट्रैक्ट हेमी, वी सब्ट्रैक्ट सिलेंडर, सो वी गेट कोन, राइट? Yes, sir. सो टोटल टोटल हमारे पास है 88 पाई, शिफ्ट एंड पाई डिवाइड बाय 3। ये टोटल है, राइट? ये बात माइनस हेमिस्फेयर इज 16.8 माइनस बेटा सिलेंडर इज 65.3। सो चेक कि कोण कितना है। कोण है बेटा 10.5। कोण इज 10.05। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, इबाद वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 10.5 हमें गिवन है, 10.05 गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 2 स्क्वायर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज अननोन, राइट? इबाद Yes, sir. एच को सब्जेक्ट बनाने के लिए 3 वहां पे क्या होगा इबाद? Multiply. और 2 स्क्वायर पाई यहाँ पे डिवाइड होगा कि नहीं? Yes, sir. 2 स्क्वायर पाई डिवाइड हो गया, तो ये आ गया एच। सो कैलकुलेटर में करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 होता है, तो मैं 4 पाई लिख देता हूँ, ठीक है ये बात। जी सर, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द कोन इज 2.4। हाइट इज व्हाट? 2.4. लेट्स चेक अगेन। सो 10.05 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 पाई, शिफ्ट एंड पाई। सो द आंसर इज 2.399, तो 2.4 आएगा, तो 2.40 लिख देंगे, ठीक है ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड, थैंक्स। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। चलें, एक क्वेश्चन अभी आईजीसीएसई का भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जरा जीसी वाला करते हैं, चलें ये कर लेते हैं जरा क्वेश्चन। ये जीसी के पेपर में आया था बेटा। द डायग्राम शोज अ पेंटागन। ओके, इबाद डू वी हैव एनी पर्टिकुलर फार्मूला फॉर द पेंटागन? क्या हमारे पास पेंटागन के लिए कोई फार्मूला है? Yes, sir. कौन सा फार्मूला है हमारे पास पेंटागन के लिए, जरा बताएं मुझे। N minus 2. बेटा नहीं नहीं, इंटीरियर एंगल नहीं निकाल रहा मैं। पेंटागन का एरिया फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला है? कह रहा है ना कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। एरिया के लिए तो सर नहीं है। नहीं है? तो अगर इबाद यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आयाना एक डॉटेड लाइन लगा दूं, तो क्या कह सकता हूँ कि ये 4 है? यस सर। ओके, इबाद है ये ऊपर वाला पीस एक ट्रापीजियम नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये दो ऊपर वन 12 है, पेयर ये ऑफ पैरेलल 4 हो गया। साइड्स। अच्छा, ये वाला पीस भी निकाल सकते हैं 15 में से 9 माइनस करके, राइट? यस सर। 15 माइनस 9 इज 6, ये 6 हो गया, ठीक है। ये हाइट हो गई आपकी। ओके, अयाना क्या नीचे वाला रेक्टेंगल है बेटा? जी सर। तो ये 9 9 होगा। तो हम A1 A2 फाइंड करते हैं बस, और दोनों को ऐड करेंगे। तो A1 है रेक्टेंगल, सो 4 × 9 इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 है बेटा ट्रपीजियम, ट्रपीजियम फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो 12 + 4 टाइम्स हाइट, हाइट इज 6। सो A2 इज इक्वल टू 12 + 4 इज 16, 16 × 6 डिवाइड बाई 2 इज 48।
centimeter square. Add both of them. So 36 plus 48, the answer is 84. So the answer is 84 centimeter square. So Ayana, keep this in mind. We don't have the formulas for the pentagons. Hexagon, octagon, इनको split करते होते हैं दूसरी shapes में, ठीक है? Okay, find the perimeter of the pentagon. Pentagon का perimeter find करना है. Perimeter किसे कहते हैं ये बात? Sir, sum of all sides. Sum of all sides. Okay. इबाद इस पेंटागन में कितनी साइड्स अवेलेबल हैं? 5 sir. 5 हैं. 5 में से कितनी आपके पास अवेलेबल हैं? 4. 4. गुड. ये फोर्थ फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगाते हैं और ये ट्राइंगल आउट करते हैं, राइट? ये बात Right sir. ओके जी, मैं ट्राइंगल आउट कर रहा हूँ. आई नो दैट कि ये लेंथ 6 है. ये 12 में से बेटा 4 माइनस करो तो 8 आता है. Yes sir. ओके जी, तो हमने ये निकालना है हाइपोटेन्यूज. सो आयाना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो मतलब एच इज इक्वल टू 10, राइट आयाना? Yes, sir. So perimeter is sum of all sides. So 12 plus 10 plus 9 plus 4 plus 15. 5 के 5 हो गए. So 12 plus 10 plus 9 plus 4 plus 15. So the answer is 50. So 50 centimeter is the perimeter of this pentagon. ठीक है बेटा, समझ आइए आया ना? जी सर. बेटा कहता है वॉल्यूम ऑफ द sphere is equals to 4 by 3 pi r cube. Volume of the sphere is given. Calculate the radius. तो इसका मतलब है वॉल्यूम is given. So 2572 is equals to 4 by 3 pi. r की जगह पे हम लोग लिख देंगे r क्यूब. हमें r फाइंड आउट करना है तो 4 by 3 pi वहां पे जाएगा फ्लिप होके, राइट है ना? 3 मल्टीप्लाई होगा और 4 पाई डिवाइड होगा. एग्री बेटा? देखते हैं r जी ये सर. लेफ्ट साइड पे कैसे आता है कैलकुलेटर में. तो ये आएगा 2572 multiply by 3 divide by 4 and shift and pi. So the answer is 614. 614. अब क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा क्योंकि we need r not r cube. So r is shift and this is the button. Where is the button for the cube root? स्क्वायर रूट वाला बटन होता है, डायरेक्ट ही आप इसको दबाएंगे तो नहीं आएगा, आपको शिफ्ट दबाना है. और आंसर लिखें तो वो आंसर कोड हो गया है. So it is 8.499. So it is 8.50. 8.50. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? समझ आइए बेटा सबको? यस और नो? Yes sir. बेटा क्लास रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है तो ये आज मैं ख़त्म करके और फिर इसको मैं इंशाल्लाह जो कल जो है ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है मैंने. ये देख लें बेटा. A cuboid has the dimensions 2, 6 and 22.5. So we can see that this is length, that is breadth, that is height. Calculate the total surface area of the cuboid. So total surface area of the cuboid is 2 bracket LB प्लस बी एच प्लस एच एल. सबकी वैल्यूज को डाल लें. 2 एल बी का मतलब है 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5. सो कैलकुलेटर की गेम है सारी. 2 ब्रैकेट 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 multiplied by 22.5 bracket close equals. So the answer is 504. So 504 is the total surface area of this cuboid. Is this clear everybody? Yes sir. Okay. They say that a cube of edge x has the same surface area as the cuboid. Form an equation in x and solve it to find the length of the each cube. तो मतलब कि total surface area of the cube is equals to what? That is equals to 6L square. So total surface area is 504 into to 6L square. बेटा मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई गलती हो गई है. ज़रा एक मिनट चेक करते हैं. 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 is 135. 6 2s are 12. 2 multiplied by 22.5 is 45. The 2.5 multiplied by 2
इज 45। जरा इन दोनों को सबको ऐड करते हैं। 135 +12 +45 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें जी, गलती हुई थी हमसे, हमने बोर्ड मास शायद नहीं लगाया बीच में। सो कैलकुलेटर में एरर आ गया था। 384। 384 एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर ऐसा नहीं आता था। तो दैट इज 384। Divide by 6 on both sides. So 6 and 6 cancel. So 384 divide by 6. So the answer is 64. So L square is equals to 64. So L is equals to 8. Agree? That is the length of edge of the cube. देखो क्यूब वैसा होता है ना ये बात। यस सर। अगर इसका 8 8 8 हो ना, तो इसका भी सरफेस एरिया वही आएगा जो कि क्यूबॉइड का आया है। समझ आई? यस सर। इसका मतलब है कि इस क्यूबॉइड को ओपन कर दो और 8 8 सेंटीमीटर का आप क्यूब बनाना चाहो तो आप इसी क्यूबॉइड के पेपर से बना सकते हो। ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? हैसन एनी क्वेश्चन? अयाना, इबाद, कबीर, मारो। Yes, बेटा sir. एनी क्वेश्चन? काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली हैं। सो मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूरी वर्कशीट मैंने बनाई है, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं बीच में, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है? और जहाँ पे समझ ना आए पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूंगा। ठीक है? इज दिस क्लियर? यस सर। क्योंकि कुछ काम आप खुद भी करें, क्योंकि पेपर आप लोगों का है, मेरा नहीं।